Okay, gentlemen, Jai Hind. Jai Hind. Today we are gathered here for the passing out of our 8 of 2025 batch of SSB. We have been operating the SSB batches on regular basis, twicely in the month. This batch is going to pass out. We got so many entries, students here, NCC special entry, APCAT, CDS and NDA. Now this is the day today, they are going to pass out, and next batch is going to start from 12th of May. As you know, the Doon Defence Academy has been preparing the student for the complete guidance of SSB. Especially for the 11th class students, they are here to witness this farewell. But have you seen that this ground? Yes. Obstacle ground here? Okay, one day you will be here and you will be sitting like this, like these students. And one day you will be sitting here for the complete guidance and preparations. I will tell you what we have done here during these 2 weeks. Complete preparations of GTO, psychology, interview, OIR, stage 1, stage 2, completed by our experts. Colonel Sudhir Verma sir, retired Indian Army, and Mr. Rabi Patel, and Mr. Pankaj Kandari. They have taught here the complete OIR. What I am telling you, those students going to pass out today, you got all the observation? Yes, sir. Have you got all the observation here? Yes, sir. About the interview, psychology, everything? Yes, sir. Are you confident? Yes, sir. Okay, gentlemen, now your duty before proceeding for the SSB, Service Selection Board. What are the things you have to make sure? First of all, observation has to be completed. Okay? Yes. If you got some problem in communication skill, has to be complete. Improve your communication skills straight away. Current affair knowledge. Understood? Yes, sir. And apart from this, complete information about the defense forces. Okay? चाहे आप नेवी के लिए जा रहे हैं, चाहे आर्मी के लिए जा रहे हैं, एसएसबी के लिए, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए अबाउट द डिफेंस फोर्सेस. व्हाट इज द प्रेजेंट सिनारियो? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो इस वक्त जो सिंदूर ऑपरेशंस के ऊपर चल रहे हैं, वो क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जाएंगे. जस्ट मेक योर माइंड एवरीथिंग, जस्ट चेक इन गूगल. नाउअडेज न्यूज हैज बीन रनिंग, तो उसमें से सब चीज रेडी कर लो. डॉक्यूमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू. जब आप फर्स्ट दिन आप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, आपका पीपीटीटी होगा, which had already covered here in Doon Defence Academy. जो स्टेज 1 सारा कवर हो गया है. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको बता दी गई हैं. आपको टाइम पे पहुंचना है एसएसबी सेंटर में स्ट्रेट वे. योर ऑल द यूनिफॉर्म, योर ऑल द डॉक्यूमेंट हैज टू बी रेडी इन ऑल रिस्पेक्ट. पूरा उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो है रुक जाता है मामला. यानी कि आपके डॉक्यूमेंट चेक हुआ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो एज पर योर ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस गिवन इन योर मेल, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हैज़ टू बी अटेस्टेड. जो जो एफिडेविट बनवाने हैं, आपकी यूनिफॉर्म्स हैं, सारी चीज़ रेडी होनी चाहिए. अंडरस्टूड? ये बहुत जरूरी है. अंडरस्टूड? Yes, sir. एंड ड्यूरिंग एसएसबी बी नेचुरल, विच ऑलरेडी टोल्ड यू हियर. आपको नेचुरल रहना है. आपके इंटरव्यू के दौरान यू बी कॉन्फिडेंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, आपकी आईज एंड ईयर शुड बी ओपन ऑलवेज. अंडरस्टूड? Yes, sir. Actually, SSR want to see the confidence level of particular students, whether he can become leader or not. Okay, gentlemen. Yes, sir. SSB is only for selection, not for rejection. They want to see the potential of the candidate. They want to see the leadership qualities of the candidate. They want to see the management power. कि आपके सामने जैसे आपके जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको सीधा रीड कर जाएंगे. ठीक है, वेदर इसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं डिफेंस ऑफिसर्स की. दैट्स आई एम टेलिंग यू, बी नेचुरल. वहाँ पर अब किसी चीज़ को वो नहीं करना. अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, स्ट्रेट वे यू कैन से सर आई गॉट अ लिटिल डाउट ऑन दिस क्वेश्चन, आई विल चेक एंड गेट बैक सर. स्ट्रेट वे, डोंट बीट अबाउट द बुश. किसी चीज़ को चक्करदार ढंग से नहीं घुमाना है कि सर शुड लाइक दिस, नो. ठीक है बेटा? Yes, sir. द ऑफिसर लाइक क्वालिटी यू हैव टू शो देयर. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये सब चीज़ें होनी है. Please sit down. Okay. For the benefit of 11th class, this batch is over after 15 days of exclusive SSB training, and you will get to see as to how we pass out batches every 15 days. And I hope you have imbibed all the nuances that we have taught here. Okay. And this is just the beginning for the batch. Okay. Now you know the track, you know the expectations, you know the standards.
Now it is into your hands how to modify your own way of functioning in a manner that you reach the list of recommended candidates there. Okay. And what I have seen personally in my experience, between any two kids, there is not much of a difference. Difference is just 19-20. एक 19 पे अटक जाता है, दूसरा 20 पे निकल जाता है. That is the only difference. If you are thinking of somebody is thinking कि 15 और 20 का difference होगा, ऐसा नहीं होगा. Neither it happens in the real world. Competition is quite stiff, so difference is very, very little. So that little difference you have to make up by practices, because there is no shortcut to anything but practice. Even professionally, we also practice a lot of our own profession. Okay. So Dr. Saab is here. 1, 2, 3. Jai Hind Sir. Please sit down. कौन कौन जा रहा है अभी? अब वहाँ पे 24th को नहीं हो आप यहाँ पे? Actually 24th को we are celebrating Operation Sindoor success day on 24th. But आप लोग हैं नहीं, तो इसलिए आपका कैश अवार्ड आज ही मिल जाएगा, जो भी बेस्ट ऑफ लक आज ही मिल जाएगा. मैं I want to say only one thing. SSB boards are made for selection, not for rejection. Right? सेलेक्ट करने के लिए वो इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रिजेक्ट करने के लिए नहीं है. बट जो रिजेक्ट होते हैं या जो रिकमेंड नहीं होते, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी वो रिकमेंड नहीं होते. तो एक जनरल परसेप्शन है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं होते, नॉन रिकमेंड ज़्यादा होते हैं, स्क्रीन आउट हो जाते हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट. जो कैपेबल है, जिसने अपना जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बेसिकली वही चेक करते हैं, वो अच्छे से समझा है और ओरिजिनल है, वही सिलेक्ट होता है. तो आपको पूरी ट्रेनिंग में वो बता ही दिया होगा, तो आई हैव नॉट मच टू से अबाउट दिस. सो विश यू ऑल द बेस्ट. और एक एक करके मेरे पास आएंगे, और एक प्लास्टिक का फूल है, ये मैं आज दूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप फाइनली रिकमेंड होके आएंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे और मुझे इसके बदले एक बुके देंगे. प्रॉमिस? Yes sir. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट करते आ रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से भी बहुत सारे रिकमेंड हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आए और बुके मुझे वापस करें. ये एक तरह से आप पे TY लोन है ये. चलिए यहाँ पे आपको जस्ट यू हैव टू कम हियर, आपको अपना नाम बताना है और प्लेस बताना है, कहाँ से आप. Good morning everyone. My name is Satish Kumar. I am from Kharagpur, West Bengal, and I am here for FCAT entry. गुड लक, ऑल द बेस्ट. हमारे एयरफोर्स ने तो क्या कमाल कर रखा है ना. अब आपका टर्न है. Good morning everyone. My name is Naman Bajpayee and I am from Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, and I am going through SSC technical entry. ऑल द बेस्ट, गुड लक. Good morning everyone, my name is Vaibhav Radwan and I am from Rishikesh and I am going for SSC Tech Entry. ऑल द बेस्ट. Good morning everyone, my name is Nandini Rawat. I am from Haridwar, Uttarakhand, and I am going for NCC special entry. गुड, ऑल द बेस्ट. Jai Hind everyone, my name is Charu Pawar. I am from Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh, and I am going for NCC special entry. Good morning to one and all. My name is Divyanshu Son. I am from Pithoragarh, Uttarakhand, and I am going for FCAT entry. ऑल द बेस्ट. Good morning ladies and gentlemen, my name is Ayush Payal, I am from Rishikesh and I am going for SSC Tech 65 entry. ऑल द बेस्ट. Good morning everyone, my name is Nandini Rawat and I am from Haridwar, Uttarakhand. I came here for my NCC special entry SSB and it was a very wonderful experience. I got to learn about the exact same procedure and I have also felt the improvement in myself in the group discussions, and I have also built up the confidence among the group. Thank you. Jai Hind, my name is Charu Pawar. I hail from Khurja, Uttar Pradesh. I came here for SSB coaching and my experience was really good here. I came here totally raw, but right now I am enhancing my capabilities
and my experience is really good here. Thank you. Jai Hind. Good morning, my name is Satish and I am from Kharagpur. I am here for my FCAT SSB coaching, and so far the SSB coaching has been really good. I have improved everywhere, even in my lecturate, ground tasks and interview. Each day is an improvement process here at Doon Defence Academy, and I am really confident that this time I'll crack the interview. Thank you. So my name is Naman Bajpai. I am from Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh, and I came here for my SSB interview batch. And I have my SSB in June. I have got selected through SSC Tech Entry, and here in Doon Defence Academy it was a very good experience. I have got confident in every GTO task, OIR, and even in the interview. The feedback given by the teachers was also very well, and the teachers are here well experienced and well taught. Thank you. Jai Hind, my name is Vaibhav. I am from Rishikesh. I have took 14 days SSB coaching from Doon Defence Academy, and it was a very good experience for me. I have learned a lot from this course. I have improved in each aspect from lecturate to GTO. Thank you. My name is Ayush Payal. I am from Dehradun, Uttarakhand, and I came here for my SSC Tech Entry SSB for 12 days. My experience is good, including my GTO, interviewing officer, and lecturate, and my OIR is also good because it includes very things, and that I have learned a lot of things from here. Thank you. Jai Hind, my name is Divyanshu Son. I am from Pithoragarh, Uttarakhand, and I came to Dehradun, Sandeep Sir's Doon Defence Academy for my 12-day course, and I had lot of improvements, made lot of friends, and had a very good time. Thank you. और the जोश में SSB Hi sir! लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, लक्ष्य को हर हाल में पाना है. जय हिंद Jai Hind! all the best. Thank you, sir. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.